Hello everyone, this is Harsh, project lead Maverick at LawSikho. Uh, Apology for the technical error. Today, I've joined you to discuss the preparation strategy for CLAT 2021. Why CLAT 2021 when still CLAT 2020 is not yet over? Because a lot of aspirants are preparing for CLAT 2021. And the first and foremost question which I have been answering to the aspirants on individual level, I thought to come up with a session so that this particular question can be addressed altogether. Before I start with the particular session of how to plan your 2021 preparation, I have a story to share. It was back in the year when I was in my school. I was the subjects which I took was PCM plus computers. So a lot of you have been asking, "Ki sir, science lane is nuksan, isse nuksan, usse nuksan." It doesn't matter. My younger brother too had a science background. He too cleared CLAT. So this segment of streams science ले लेंगे तो दिक्कत होगी is false per se. Secondly, what happens is in this particular exam, CLAT preparation, see the number of days, the number of months, and number of years doesn't really matter. You need to understand the subjects. You need to understand the exam pattern. You need to uh, you need to go through some mock sets. You need to solve past year papers if they are available. That is the way to go ahead with this particular law entrance examination per se. Some people have cleared this exam by studying for just 4 days. Some were not able to clear this exam even after studying for 3 odd years. So that is the nature of the exam. It is competitive in nature. So it completely depends upon how well you have structured your preparation, how well you have read those subjects in your initial years, which are asked in law entrance examination. First. So now let's start with this particular session and discuss that how to plan your CLAT 2021 preparation. So before again, if we look into this aspect of CLAT 2021 preparation, I must tell you that this year, in 2020, the CLAT consortium decided to come up with a different set of a pattern which is quite different from what on which the exam has been based since 2008. So again, when you're preparing for CLAT 2021, you need to have in your mind the exam pattern which is being asked in CLAT 2020. Okay? Do not go into the controversy about around this CLAT and NLAT, etc., etc. That's altogether a different thing. It has nothing to do with your preparation. Of course, the next question which is asked is, some people have this particular question: law, why law as a career? I had a session with Mr. Ramanuj Mukherjee, the CEO of LawSikho, and in this particular session that is available on the channel itself, you can go through that. What are the various career option once you do law? And then again, everybody has a dream law college if you want to pursue law. And most of the time, I found that everybody comes up with the same password during the 1 year or 2 year of their CLAT preparation, which is NLSIU Bangalore. Okay. Uh, so that being said, the Dream Law College can vary. It Some people want to go. Some people have the first choice as NALSA. Some people have NUJS Kolkata. Um, so that way, and this way, if some college, if some law college is near to you, then your parents would want you to go there. So this dream law college, then there is this particular aspect when you're filling up the form of CLAT, then you have to fill the preferences of the law colleges. That is where this idea of dream law college comes into the picture. Which of the law school you fill in the number one spot. And also you need to have this aspiration to clear this particular exam. A lot of kids will be appearing for the same exam with you. Close to 65,000 odd people will be appearing with you, and you need to clear this exam. It's a competitive exam, so you need to have that time frame in mind कि अपने पास इतना time है, ये subjects आएंगे, मैं इन्हें ऐसे ऐसे approach करूंगा, ऐसे हर दिन, क्योंकि ये 1 साल की duration है या 2 साल की duration है रही है, तो उसमें किस तरीके से motivate रहना है. So there are a lot of questions with respect to that. So you need to have that aspiration to crack this particular exam, CLAT. Next is subject wise
strategy, and this is what I talk, this is what I talk to the uh, aspirants. Once, like if you're preparing for CLAT 2021 or somebody is preparing for CLAT 2022, so you need to understand that there are 5 subjects which are asked in law entrance examination. And if I had to prepare, I would first finish off the subjects which are static in nature. Understand this, static in nature, जिसमें कुछ नहीं बदलना है. जैसे इंग्लिश की तैयारी में अगले एक डेढ़ महीने में कर सकता हूँ. And post which I will just solve the mocks, I will just solve the papers, and I don't need to study actually. Like once I know about the grammar, the tenses, what are the subjects, proposition, etc., etc. I don't need to go back again to that particular notion. I can just go through, I can learn new words every given day. That I can do. But I will not sit back again with Ren and Martin if I have finished it in 1.5 months, because that is static in nature. That won't change. Ren and Martin would not become a new book all of a sudden before my CLAT. The second subject, maths, which for the new pattern is quantitative aptitude, and basically it's data interpretation. Now, data interpretation, while we were having this session for Project Maverick, uh, I was in individual capacity associated with the teachers who were taking your classes. And I came to realize everybody has the same saying कि ये पूरा टॉपिक जो है हम लोग को बेसिक्स समझनी पड़ेंगी मैथ्स की 10th वाली, जिसके लिए अपन को चाहिए होंगे 10 सेशंस. सो एक्चुअली इफ आई एम प्रिपेयरिंग, आई विल से 10 की जगह मैं 20 दिन ले लेता हूँ, 20 given day for the basics, then structure, then bringing those concepts to data interpretation, another 10-15 days. So I actually see that it's like 35 days, again a window. So again इसको और एक्सटेंड कर लें तो 1.5 महीना अगेन. सो जो पूरी मैथ्स है, जो ये सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का या डेटा इंटरप्रिटेशन का, ये पूरा खत्म किया जा सकता है 1.5 महीने में. सवाल आता है कहाँ से खत्म करेंगे? प्रोजेक्ट मेवरिक के वीडियोस अवेलेबल हैं LMS पे, आप उन्हें देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं, साथ में सॉल्व कर सकते हैं. दैट इज वन वे. जो क्विजेस हैं उसके साथ एसोसिएट, उन्हें सॉल्व कर सकते हैं. तो मॉक टेस्ट पेपर पढ़े हुए हैं, फिर आप उसमें जाकर खासतौर से मैथ्स के सेक्शन को अटेम्प्ट कर सकते हैं. All these things you can do for math segment. So again, a static subject. अब ये भी नहीं है कि एक पेपर आने वाला है क्लैट 2021, उसके 15 दिन पहले किसी ने डेटा इंटरप्रिटेशन बदल दिया, ठीक है, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए. तो ऐसा नहीं होने वाला है. जो सब्जेक्ट है वो वही रहेगा, उसके फंडामेंटल्स वही रहेंगे, उसके एप्लीकेशन पार्ट में वी नीड टू वर्क अपॉन. तो पहले हम सब्जेक्ट के बेसिक्स कवर कर लेंगे 1.5 महीने में, फिर हम जाएंगे उसको सॉल्व करने के लिए. So this has to be a strategy. Like आज की तारीख से अगर मैं मान के चलूँ तो I am sitting on the midway of the September. Midway of the September I pick up English because that's very important subject to pick up. So मैं अगले 1.5 महीने के लिए मान के चलूँ तो मेरा अक्टूबर तक English, I'm done with English. Then only after which I will need practice. The next will then I will pick up in November. I will pick up this particular subject's maths along with logical to certain aspect, ठीक है. और फिर मैं इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा मैथ्स अलोंग विद लॉजिकल इन अपना हो गया अक्टूबर तक, ठीक है. नवंबर दिसंबर आई एम वर्किंग ऑन 2 सब्जेक्ट्स. आई हैव टोल्ड यू अबाउट मैथ्स. नाउ लेट्स कम डाउन टू लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग का जो नेचर है वो प्राइमरली हो गया है क्रिटिकल रीजनिंग का, ठीक है. क्रिटिकल रीजनिंग की आती है किताब, ठीक है, बुक्स आती हैं RS अग्रवाल की, ठीक है. वो एक प्राइमरी रिसोर्सेज है. सेकंड, अगेन यू कैन गो बैक अगेन टू द वीडियो लेक्चर्स ऑफ प्रोजेक्ट मेवरिक. you can solve the assignment posted there. That you can do, and वो भी you can pause and do it back again. And again, ऐसा कोई difficulty level नहीं है. Logical reasoning for that matter, I remember when I was giving this particular exam, I just went to YouTube in that particular year. I was just watching one particular class or lesson, and then post which I was again googling out for questions and solving them. So in a single day, either this strategy, in a single day you can finish one topic of logical reasoning. And हैं ही कितने topic, the maximum topic extend possible, ठीक है, is 15 maximum. 15 दिन में हो सकती है if you want to do it. Again, if you want to do it in 15 days, but considering अपन मैथ्स भी कर रहे हैं, फिर मैथ्स खत्म होने के बाद इसको भी कर रहे हैं, सो ये मान के चलेंगे कि अपन दोनों पे साइड बाय साइड काम कर रहे हैं, ठीक है. दैट बीइंग सेड, ये फिर स्टैटिक सब्जेक्ट है, अब एकदम से नहीं बदल जाएगा, बिल्कुल नहीं बदलना. अब ये नहीं क्लैट का पेपर होने वाला है तो किसी ने बोला कि नहीं आज तो कॉन्सेप्ट हम ब्लड रिलेशन के बदल दे रहे हैं.
Like nobody, this will not be changed. Like somebody will not change the concept of blood relation. There will not be changes in the direction test. कोई ये नहीं बोलेगा आज से ईस्ट ईस्ट नहीं रहा, ठीक है, until they give you in a question that suppose, ठीक है, और it is given, ठीक है, तब तक कुछ चीजें नहीं बदल लेंगी, ठीक. सो दैट बीइंग सेड अपन इसे खत्म कर सकते हैं इन नेक्स्ट 2 मंथ व्हिच इज बाय दिसंबर. अब दिसंबर तक अपन के देखा जाए, हम जो एस्पिरेंट्स हैं हम सबके 3 सब्जेक्ट्स खत्म हो चुके हैं प्राइमरली. व्हिच आर दे? 1 इंग्लिश, सेकंड मैथ्स, थर्ड लॉजिकल. तो अपने 3 सब्जेक्ट्स खत्म हो चुके हैं. अब बचते क्या हैं? 2 सब्जेक्ट बचते हैं. कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? जीके एज वेल एज लीगल, ठीक है. इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए क्या करना सबसे सही तरीका रहता है कि जो भी इनकी क्लासेस हैं अपन डेली बाय डेली इनकी क्लास अटेंड करें, क्लास में से फोकस करें, सिर्फ क्लास पे फोकस करें, ठीक है, सिर्फ क्लास पे फोकस करें. अगेन रिमेंबर इट वेरी क्लियरली, सिर्फ क्लास पे फोकस करें. अगेन दैट बीइंग सेड, अब होता क्या है कि जो एक हम लोगों के लिए डेली की एक्सरसाइज भी रहेगी, सुबह उठ के जो हमें करना ही है, मतलब वो एक तरीके से पार्ट ऑफ अ लाइफ हो जाएगा, वो ये है न्यूज़पेपर पढ़ना. न्यूज़पेपर भी पूरा नहीं पढ़ना, एडिटोरियल्स पढ़ना, ठीक है, सिर्फ एडिटोरियल्स या वो हेडिंग्स जो आपको सजेस्ट की जाती है, सजेस्टेड रीडिंग आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, प्रोजेक्ट मेवरिक पे, सिर्फ वो अपन को हेडिंग्स पढ़नी है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है. यू डोंट हैव टू पिक अ पेपर एंड देन गो थ्रू द स्पोर्ट्स सेक्शन आल्सो, एंड यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट व्हाट हैपेंस टू कंगना रनौत, ठीक है, और व्हाट हैपेंस टू रिया चक्रवर्ती, ठीक है. दैट्स नन ऑफ आवर कंसर्न. दैट इज देन देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ, जब हम पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर की कंपल्सरी रीडिंग बोली जाती है, तो देन देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड फॉडर, ठीक है. अपन को फूड लेना है, द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर इंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है. एडिटोरियल हो गया, वो जो टॉपिक्स हैं आपको सजेस्टेड रीडिंग में बताए गए, अपन को फॉडर कंज्यूम नहीं करना है. ये चीज बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है. अब 3 सब्जेक्ट्स हो गए, अपन जनवरी में आ रहे हैं, और अब अपने पास हैं अगेन 2 सब्जेक्ट, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स एंड लीगल. लीगल और जीके अपन लोग साइड बाय साइड भी कर रहे थे क्लासेस वाइज, ठीक है. तो अगेन ऐसा कुछ पीछे हम गए नहीं, न्यूज़पेपर रीडिंग भी कर रहे थे, तो अपन की करंट अफेयर्स भी अपने साथ है. जनवरी में पहले 15 दिन में हम उठाएंगे स्टैटिक जीके के टॉपिक, ठीक है. अपन को ये करना चाहिए, स्टैटिक जीके उठानी है, सिंपल सी बात है, लूसेंट की. देन अगेन यू हैव अ चॉइस, कहाँ से उठाएंगे. प्रोजेक्ट मेवरिक में तो लेक्चर्स पड़े हुए हैं, वो देख सकते हैं. अब बुक्स चाहिए तो भाई बुक को कुछ लोग बोलेंगे लूसेंट की किताब उठा लो, लेकिन मत उठाना, ठीक है. लूसेंट, द बुक ऑफ लूसेंट ऑन स्टैटिक जीके इज मेड फॉर पीपल हु आर अपेयरिंग फॉर सरकारी नौकरी वाला सेगमेंट, ठीक है. टू डिस्क्रिप्टिव, ठीक है. You pick up a book of Arihant, 30 rupees one, the small one, that's more than enough, ठीक है. Most of the teachers will teach you from that book without telling you कि वो बुक अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वही अपन को पढ़ लेनी है, काम खत्म. तो 15 डेज हैं अपने पास अगर जनवरी में, और अपन उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, we will easily be able to do it, ठीक है. इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो पूरी बुक आराम से हो सकती है. People have read that particular book in just one single day. You can actually read that book thrice or 4 times during this period of 15 days. Again, marking also what is important, etc. So that being said, अपना 15 जनवरी तक खत्म हो चुका है ये स्टैटिक जीके वाला पोर्शन. अब आती है मेन सवाल, अब आते हैं मेन सेगमेंट. अगेन अब इसमें क्या है, इसमें एक जो कॉन्सेप्ट है जो अपने लिए बहुत जरूरी है, वो ये है कि अपन को देखना पड़ेगा कि ये जो करंट अफेयर्स है इसके लिए क्या करना है, ठीक है. Varesh, the name of the book is it's by Arihant Static GK. The last time I bought this book in 2013, it was of 30 rupees, ठीक है. So I don't know the current pricing, but बढ़ के भी 35 ही हुई होगी, ठीक है. Okay. That being said, कि हम जब इसकी बात कर रहे हैं तो फिर आएगा ये करंट अफेयर्स. अब करंट अफेयर्स इस वाले क्लैट के बाद से, तो ये वाला क्लैट तो अब सितंबर तक आ चुका है, ठीक है. तो अपने लिए पेपर कहाँ से जीके स्टार्ट होगी, अक्टूबर ऑनवर्ड्स. ये एक अच्छी चीज हो रही है अगले साल के एग्जाम के लिए. जीके का जो स्पैन है वो शायद कम हो जाएगा, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग. सो अब फिर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हम जनवरी में तो हैं, जनवरी वाला तो अभी सेगमेंट आया ही नहीं. अभी 3 महीने की जीके अपन को पढ़नी है जो अभी तक हो चुकी है करंट अफेयर्स वाली. अगले 15 दिन में अपन सब कम से कम 5-6 बार पढ़ सकते हैं. दैट बीइंग सेड, ठीक है. तो जनवरी में वी आर देयर, जहां पे अपनी जीके के साथ वी आर रेडी. जितनी जीके हो चुकी है करंट प्लस स्टैटिक, वी आर रेडी. सो जनवरी में वी आर रेडी विद 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है. नाउ इट कम्स डाउन टू द 5th सब्जेक्ट, दैट इज लीगल एप्टीट्यूड. अगेन प्रोजेक्ट मेवरिक में यू हैव दैट लीगल वाला पूरा का पूरा फोल्डर. You can go through that at your discretion any given day, ठीक है.
जो उसमें 188 लेसन हैं, यू कैन गो थ्रू दैट, ठीक है। इसके बाद जो अभी करंट हैपनिंग्स हो रही हैं लीगल की, जो जीके के अंदर भी आती हैं, जो थॉरो न्यूज़पेपर एनालिसिस जो होता है उसमें भी आती हैं। अगेन दैट बीइंग सेड, लीगल के जो कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ पे फरवरी में आके अपन को अपने जाना है एलएमएस में, लीगल के टॉपिक वाइज क्लासेस एक्सेस करनी है और बस बैठ जाना है। हर दिन अपन को ये कोशिश करनी है कि अपन 4 से 5 घंटा लीगल की क्लास के लिए दें। 5 hours daily in the month of February, which I take it even for 25 days you are doing, is 100. This in 100 hours you can entirely finish everything legal के छोटे से लेकर कॉन्सेप्ट से लेकर क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है। कंसिडरिंग कि आप क्लासेस साथ में भी कर रहे थे पहले भी ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हिच हैज कम डाउन टू February, ठीक है। तो February तक आते आते अपना एक पूरा सेगमेंट खत्म हो चुका है। सब्जेक्ट वाइज वी आर इन अ वेरी गुड पोजिशन, ठीक है, कि अपन ने सारे सब्जेक्ट्स खत्म कर लिए हैं, रिवीजन भी करते हैं, सब हो चुका है, ठीक है। अब आता है मार्च का पीरियड। अब इसके बाद से फरवरी के बाद से जो भी टाइम फ्रेम बचता है, जिस भी दिन के लिए एग्जाम आपका शेड्यूल किया जाता है, मोस्ट प्रोबेबली मई में होता है, ठीक है। सो मार्च हो गया अपने पास, अप्रैल हो गया, ठीक है। अपने पास 2 महीने हैं। 2 महीने आवर सिलेबस इज डन, व्हाट वी विल डू इन दीज 2 months, सॉल्विंग मॉक्स एंड ऑफ द स्टोरी। सैम्पल पेपर अपने सबसे पहले सैम्पल पेपर लगाएंगे, अगर रिलीज होते हैं, जो इस साल रिलीज हुए थे उनको भी लगा सकते हैं। इस साल का पेपर जो होगा वो भी पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, आप उससे लगाना सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपन कोशिश करेंगे कि हम डेली एक मॉक जरूर लगाएं, ठीक है, क्लैट का। और हफ्ते में 2 मॉक एटलीस्ट लगाएं एआईलेट का, उसके लिए हम कभी अलग बात करेंगे। सो अब ये जो टाइम फ्रेम बचता है 2 महीने, अपने पास अपन हर दिन भी मॉक लगाते हैं, मान लेते हैं संडे को भी छुट्टी ले ली, ठीक है, तो 24 मॉक्स इन अ मंथ, which means 48 marks, which is more than enough. Like it's clearly more than enough to appear in any entrance examination, ठीक है। वो भी क्लैट जैसे पेपर के लिए इट्स वेरी, मतलब इट्स लाइक बहुत ज्यादा हो गया। सो जब ये हो गया तो वंस यू अपीयर इन योर एग्जाम, तो क्वाइट रेडी, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स तुम्हारे हो गए, टाइम फ्रेम से हो गए, और तुमने मॉक भी इतने ज्यादा लगा लिए, और उसके बाद इन मॉक को लगाते समय तुम्हें पता चला तुम्हारा कोई एरिया वीक है, उसमें भी तुम्हारे पास अब 2 महीने हैं, क्योंकि लास्ट में तुम जाके रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। कुछ चीज हटाई जा नहीं रही है, एलएमएस पे सब पड़ी हुई है, फिर से जाके वहीं से पॉज, आपको तो पता ही अब कहाँ पे क्या है, जस्ट लॉग इन, go through it and try to solve it again. So अपन यहाँ पर जब आए तो we are completely ready for CLAT 2021 subject wise strategy, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मंथली प्लान्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। मंथली प्लान्स, दिस इज नथिंग टू डू विद कि सर हमको वोडा ओडा वाला बता दीजिए, नथिंग लाइक दैट। मंथली प्लान मीन्स विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन strategy. So I've told you this is how I would have prepared the exam. The second thing is that you can do the other way around. You can say कि हम 1 महीने में हम सुबह उठ के पहले 2 घंटे इंग्लिश पढ़ेंगे, फिर 1 घंटा ये पढ़ेंगे, फिर 1 घंटा ये पढ़ेंगे, फिर 1 घंटा ये पढ़ेंगे। That you can also do if you have that time capacity कि आप दिन में 8 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हो, which a lot of you will agree to, that you are ready to give that particular time frame of आप तैयार हो उसको 8 से 10 घंटे पढ़ने के लिए। But again, considering that few of you will be having schools as well, which by default are online these days, ठीक है। So उसको ध्यान में रखते हुए you can strategize in this fashion also कि हम दिन में हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे देंगे, ठीक है। But if I had to prepare for this particular paper, I would have prepared in this manner. मंथली मैं पहले एक सब्जेक्ट खत्म करता, फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट में जाता, जिससे मैं उस बीच में पूरा फोकस उस सब्जेक्ट में कर पा रहा हूँ, उसमें कुछ भी नहीं बचा है मेरे लिए करने को, ठीक है। एंड आई नो कि अब इससे कुछ भी पेपर में आएगा, आई विल बी एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। दैट इज अनदर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। इसमें क्या होता है, डेली 2 घंटे इसमें देते हैं, ये बहुत लोग अपनाते हैं। मोस्ट ऑफ योर मतलब अगर आप किसी और से बात भी करेंगे सीनियर से, तो यही बोलेंगे सुबह उठ के पहले ये पढ़ लो, फिर ये पढ़ लो, फिर ये पढ़ लो, ठीक है। दैट इज ऑल्सो अनदर स्ट्रैटेजी, ठीक है। दैट माइट वर्क फॉर फ्यू पीपल कि हम डेली पढ़ रहे हैं, ठीक है। या उन लोगों के लिए भी जो बोर हो जाते हैं एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा, एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पढ़ के। बट यहाँ पे बोरियत वाली बात नहीं है, इट इज ऑल अबाउट इंश्योरिंग दैट once you are ready to attempt mocks or once you are ready to attempt the paper, you are in such a position that अगर 150 का पेपर है तो आपकी बार 120 प्लस के पार वाला नोशन फुलफिल हो जाए, ठीक है। यू आर एबल टू एक्चुअली clear that particular benchmark which I've said is 120 plus. So उसके लिए you need to have that set
strategy. You can share with me on an individual basis this monthly plan if you want to go ahead with this 2 hour वाला framework. ठीक है? मंथली मैगजीन्स तो ये तुम्हें आवाज मिलती ही है, वो पढ़ते रहो, कभी भी एक दिन उठा के सैटरडे उठा लो, संडे उठा लो, 3 घंटे लो, एक बार कर लो, गो थ्रू, अंडरलाइन कर लो, कीप इट। जब आपका जनवरी आएगा और जब करंट अफेयर्स में आएंगे, बस पढ़ना चालू। लीगल करंट अफेयर्स के क्विजेस अवेलेबल हैं एलएमएस पे, उनको सॉल्व कर लेंगे, हो गया अपना काम सेगमेंट। अगेन what happens is what's the new thing is importance of mock test. अब mock test का क्या सेगमेंट है कि a lot of people will tell you कि first कि quality versus quantity, I will have a session on this very soon. बट मॉक टेस्ट गिव यू दैट बेसिक आइडिया कि अपन की वीकनेस क्या है, अपन इस समय लैक कहाँ कर रहे हैं, कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसमें अपन को और काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें। अब मॉक टेस्ट अगेन लॉट ऑफ यू टेक्स्ट मी कि सर इनके मॉक टेस्ट में क्या बेंचमार्क होगा, किसके मॉक टेस्ट में क्या बेंचमार्क होगा। सी दैट डजंट रियली मैटर। You need to identify your weak areas, you need to identify your strength, you need to identify आप किस टाइप का क्वेश्चन नहीं कर पाए। that is what is important. You don't have to worry about कि इस कोचिंग में इतने किस बच्चे के हाईएस्ट आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। that is not up to you to understand, or you should not be even interested in doing that analytics कि सर उसके इस मॉक में पूरे 150 में से 150 आ गए। इट्स लाइक इम्पॉसिबल है। ठीक है, 150 में से 150 आ गए, आ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम्हें उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगेन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कम अप विद डिफरेंट मॉक टेस्ट, ये एक असलियत है। उन सबके स्टैंडर्ड अलग अलग होते हैं, ये भी असलियत है। उन सब की जो फैकल्टी है जो उनको मॉक बना रही है, उनकी लेवल ऑफ अवेयरनेस अबाउट दिस पेपर इज क्वाइट डिफरेंट। ये भी होता है, तो कभी ऐसा होता है आप किसी एक का मॉक सॉल्व कर रहे हैं, उससे 2 सेक्शन हैं जो एट पार विद हैं, जो बिल्कुल सेम क्राइटेरिया में हैं, जो पैटर्न है, बट कुछ ऐसे 1-2 सेक्शंस है जो बिल्कुल लाइन पे नहीं। तो आप ये देखते हैं कि मॉक के आंसर ही गलत है। ठीक है, I have while I will my years of training, 2 years I have been training kids. The kids have brought mock test papers of almost every coaching which is there in India for law entrance examination, and solving it, I can tell you that they have wrong answers. So कसमें सर मत पीटना कि सर मेरा आंसर ये क्यों नहीं आया। Also question, you should question that which you think is answer गलत होते हैं। I'm telling you, ठीक है, I will not name the coaching, the topmost coachings in the country गलत होते हैं। ठीक है, so क्वेश्चन करो उसमें कि why इसका आंसर ये है। ठीक है, sometimes they give you this even solution। ठीक है, क्वेश्चन में आंसर का सॉल्यूशन, and brave enough people to write the entire wrong solution for a correct answer or a correct answer with wrong solution। ठीक है, so थोड़ा सा इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको टाइम देते हैं मॉक टेस्ट को। ठीक है, और एनालाइज भी करते हैं मॉक को। इस वन एक सेपरेट सेशन में बात करेंगे किस तरीके से एनालाइज करते हैं मॉक को, किस तरीके से मॉक को पढ़ाते हैं, मतलब उसके लिए क्या कॉपी बनाते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक अलग डिस्कशन होगा अपना। ठीक है, अच्छा, that being said, then what all I need to clear CLAT 21? Another very very important question. सर मुझे क्या क्या चाहिए होगा, because even a warrior, even a soldier asking मुझे ये weapons चाहिए। ठीक है, so एक एस्पिरेंट है जिसे CLAT 2021 क्लियर करना है, तो उसे क्या चाहिए? फॉरमोस्ट चाहिए उसे विलिंगनेस टू क्लियर दिस एग्जाम। ठीक है, सबसे पहली जो जरूरत ये है कि वो विलिंगनेस ये कि हाँ ये पेपर हम क्रैक कर लेंगे। ठीक है, वंस यू आर इन दैट मूड कि हो जाएगा। ठीक है, हम हो जाएगा क्लियर, एक ही सीट चाहिए। वंस यू गो इनटू दिस टाइम फ्रेम, एवरी दिस माइंड फ्रेम becomes easy for you. If you go into the different segment कि तुम हर छोटी बात में टेंशन लेने लगे, उसके इतने नंबर आए, उसने तो ये सब्जेक्ट खत्म कर लिया, it doesn't matter. As a teacher, I've seen people perform excellent in the mock test, which starts from the period जैसे ही स्टार्ट होगा मॉक टेस्ट आने लगेंगे अक्टूबर 9, कुछ लोग अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे, 120 चले जाएंगे। ठीक है, बट ऑन अ लॉन्गर रन वो 120 या 110 जो ला रहे हैं उसमें वो स्टैग्नेंट हो जाएंगे, बिकॉज एक्चुअली ये वो हैं जो कुछ साल पहले से तैयारी कर रहे हैं। ये वो लोग होंगे, इन पे अपन को ध्यान नहीं देना है। अपन की इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी होगी, सबको अपने अपने
इंडिविजुअली प्लान आउट करनी है, ठीक है। अच्छा, willingness to clear this particular exam is the first and foremost important thing. आज के समय पे technology is an enabler. I have been stating this, technology will always be an enabler, ठीक है। You can't be aware about what's ongoing without the availability of internet or without the availability of online resources, ठीक है। तो इसको अपने बेस्ट तरीके से यूज करके जो भी अपडेट्स आ रहे हैं उनको पढ़ना है, जॉट डाउन करना है कि नहीं, दिस इज अनदर सेगमेंट। कुछ लोगों को लिख के ही याद होता है, ठीक है, उनको ये काम करना चाहिए कि जॉट डाउन कर लें चीजें, ठीक है, लिख के। दूसरे लोगों को क्या करना चाहिए, which belong to a different category of people, and this is primarily right. If your faculties are making notes for you, they are making current affairs, they are making current affairs in the country, like almost 10 faculties, 10 good faculties, I am saying, will be making this, ठीक है, they are all available on free platforms. इसको अपन पढ़ेंगे, इसमें अंडरलाइन कर लेंगे बस, ठीक है। इससे और फिर बाकी क्वेश्चन तो अपन को मॉक पे भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो अपन को ये नहीं करने लगना बाहर उठा के बैठ गए हैं एंड पहली हेडिंग बना ली है कि ओके उद्धव ठाकरे इज अनहैप्पी विद कंगना, ठीक है, ये सब नहीं करना है, ठीक है। एंड सेकेंड, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ये जो चैनल्स हैं इसमें जो जी करंट अफेयर्स के हैं, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। दे आर केटरिंग टू गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या यूपीएससी, ठीक है, उतनी चीजों पे वो फोकस करते हैं, अपने मतलब का ज्यादा उसमें नहीं है, ठीक है, ये भी एक बात है। ओके, what you need first is willingness, second you need to finish off, ठीक है। this is very essential, finish off your syllabus. Second thing is that socks, I have told you back a few minutes back, this is again important. For non-comparison, don't compare your preparation with somebody else's preparation, ठीक है। Nobody, those people are not a bench for you to replicate, ठीक है। So आपको अपनी प्रिपरेशन अपने हिसाब से करनी है, ठीक है। उसमें अपन को जनरल करना है, अब ये किया, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इस तरीके से करना है, ठीक है। इतनी चीजें चाहिए। इसके अलावा एक और चीज जो होनी चाहिए एस्पिरेंट में, वो ये होनी चाहिए कि आस्किंग द राइट फ्रॉम राइट पर्सन, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर आस्किंग द रॉन्ग पर्सन फ्रॉम द राइट person, then also it's not good use of your time nor their use. So ये एक important segment आ जाएगा जहाँ पे सही क्वेश्चन पूछो, कोई भी डाउट आ रहा है पूछो, स्ट्रैटेजी डाउट आ रहा है, करंट अफेयर का डाउट आ रहा है, I've always said and I will repeat it on this platform as well, कि see, don't this is just for the attention seeker people. If you have a question on current affairs, why not you Google it? And the time you take to type this to your mentor, you can actually Google it and read more about it rather, ठीक है, because it is static GK, ठीक है। इसके क्वेश्चन एक्चुअली गूगल पे अवेलेबल है, why will you ask to someone for that matter? ये बात समझ में आई, ठीक। ये सारी चीजें अपन को चाहिए, एंड ऑफ कोर्स you need to be doing this preparation every given day, ठीक है। ये नहीं कि आज मन नहीं कर रहा तो आज नहीं पढ़ेंगे, और अगर आज नहीं भी पढ़ा तो कल ज्यादा पढ़ लेना, ठीक है। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। How to stay motivated? First and foremost, see, you need to have that dream कि हाँ ये पेपर निकालना है, पॉइंट नंबर 1, लॉ कॉलेज पहुंचना है, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, बड़ों से बात करती रहनी है, तीसरी चीज चीजों को लिखते रहना है, क्या किया क्या नहीं किया, अपनी इंप्रूवमेंट को जॉट डाउन करना है, दिस इज अगेन अ मोटिवेटर। फिफ्थ थिंग इज टॉकिंग टू योर पेरेंट्स, टॉकिंग टू योर एल्डर्स is very very important, ठीक है, and not comparing yourself to another individual. Do not using too much social media platforms like these days. Earlier it used to be Facebook, where a lot of unimportant discussions used to take place. Now it has become, now Telegram is that particular platform where kids make groups and then type anything on planet Earth which is not relevant. They make the name of the group as CLAT, this, and then keep on talking something which is not related to even the law entrance examination. Don't do that. Also, some people will say, I gave this particular mock, मेरा तो इतना score आया, ठीक है। You just say, good. Just these words, this word, good, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया कर दिया, ठीक है, 4 दिया, बस, and then start doing your own work, ठीक है। This is how you stay motivated, ठीक है। And again, you do not need Sandeep Maheshwari or, for that matter, Sadhguru or etc. person to tell you that you need to study. If you need a motivation to study, then I guess you don't have that particular kind of a dream to clear this exam.
ठीक है. Motivation is needed for all those people who lack motivation or do not have a clear goal. ठीक है. They need this kind of motivation. They need external motivation from a particular person. ठीक है. You need to have an internal motivation. ठीक है. This external motivation will work for only 1 hour, 2 hours or 1 day. Because people said ये करना है, ये हो जाएगा, and you are motivated. एक दिन पढ़ लिया फिर हो गया. So that will end. But if you have an internal motivation, you will keep on working hard for it. ठीक है. And talk to your parents whenever you feel low कि नहीं आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा. So understand, ठीक है, कि हो जाता है ऐसा. जरूरी नहीं है you put your pressure on you कि नहीं आज तो पढ़ेंगे ही. या there is some birthday party, it's going all together, and you're saying नहीं जाएंगे. ठीक है. And also the CLAT exam is far away, more than 2 months or 1 month away. Don't do that. ठीक है. This is just an exam. This is not a UPSC civil services exam where the syllabus is such vast that you don't have any idea कि खत्म होगा या नहीं होगा. This is common law admission test. ठीक है. You can live your life. ठीक है. In the previous sessions I had with few of the toppers, including Sarthak, Vyom, and everyone. I've told you that I found these kids were actually enjoying their entire process of preparation. They were going to schools, they were preparing for CLAT. One of them was going to even gym, one was going and having coffee at every evening. ठीक है. One was traveling to like 7 kilometers to and fro. ठीक है. So that being said, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब ये पेपर नहीं निकलेगा. If you work hard, ये पेपर आराम से क्रैक हो जाएगा. ठीक है. But again, staying motivated is the key, so that your syllabus gets completed. You are in that track. जहाँ पे जब तुम मार्च पे पेपर देना, मॉक्स देना चालू करो, तो you directly land into that segment. 100 क्रॉस होने लगा. ठीक है. अप्रैल आते आते you are like in that spot 120 प्लस क्रॉस हो रहा है आराम से. सारे मॉक्स में क्रॉस हो रहा है. अब वो इंडिया के कोई भी मॉक हो, ठीक है, सब में क्रॉस हो रहा है 120. ये नहीं हो रहा तो 110 प्लस हो रहा है. ठीक है. It's a very safe score to go about. ठीक. So this is what you can do to stay motivated. ठीक है. You can watch movies, you can listen to songs, but ये नहीं कि दिन भर ये सर ने बोल दिया तो नहीं दिन भर मूवी वॉच करनी है. मूवी से ही मोटिवेट होंगे. ठीक है. अब जब तक नहीं देखेंगे तब तक पढ़ेंगे ही नहीं. ऐसा नहीं करना है. ठीक है. So just it's the saying that once you are preparing, पहले दिन में आधे घंटे से प्रिपेयर करो. If you are starting आधे घंटे से, if you are able to do it for half an hour, you will love to do the same thing for 2 hours. That I can say. ठीक है. So आधे घंटे से स्टार्ट करो. अगले दिन 1 घंटा पढ़ो, फिर 2 घंटा पढ़ो. Maximum stretch 6 hours. Maximum stretch for a CLAT preparation. I don't think that you need a stretch of more than 6 hour preparation in a single day. ठीक है. That's too much, and leave it for the people who need that. ठीक है. जिनको उतना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है. So उसको कहते हुए आप ऐसे स्टार्ट करो. 2 घंटा पढ़ लें, 2 घंटा पढ़ लें, 3 घंटा पढ़ लें. गुड. ठीक है. धीरे धीरे जैसे जैसे मंथ्स बीतते जा रहे हैं, ये नंबर बढ़ता जा रहा है. बिकॉज नाउ यू हैव लर्न द आर्ट ऑफ सिटिंग एंड स्टडिंग. और वो जो टाइम फ्रेम है उसमें काम करना सीख चुके हैं अपन. ठीक है. सो उस तरीके से इसको प्रोग्रेस पे लेके जाना है. ठीक. अगेन इस बीच a lot of people will have a question mark, will come to you and say कि ये लॉ की तैयारी क्यों कर रहे हो and everything like that. We will deal with that in a separate session. ठीक है. And most importantly, these people will be coming up and asking you the question of what is law, which they are not yet aware about. Some advocates, your father's friend or some मोहल्ले के uncle will come down and say कि कानून क्या होता है ये बताओ. ठीक है. So that is another thing altogether. ठीक है. And if you don't know answer, or if you just want to end that particular discussion, just say these words. हमको नहीं पता. ठीक है. Very easy. क्या हमको नहीं पता. या कोई ज्यादा कुछ बोल रहा है तो then go down to जो क्लासेस में बताया जाता है उनमें से कोई एक आंसर दे दो. ठीक है. If this is this आर्टिकल ये है, आर्टिकल 30. ठीक है. क्लॉज ये हो गया काम खत्म. या फिर छोड़ दो, बोल दो हमको नहीं पता. I'm sorry. This will save your time so that you can now you can go about your preparation in a positive frame of mind, because now this happens. So I'm telling you, a lot of kids have said कि सर ऐसे negative ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पूछते हैं फिर मन नहीं लगता पढ़ाई में. ठीक है. Don't look into that aspect. ठीक है. Altogether ignore for a while. Ignorance is a bliss sometimes. Okay. This is overall
what I had to say with respect to the CLAT 2021 preparation, that how you should go about for with this particular preparation. Again, what happens is there's a question which is raised कि सर newspaper कौन सा पढ़ें, ठीक है? So just read one newspaper, The Hindu or Indian Express, ठीक है? Editorials, ठीक है? Uh, Indian Express. इसको छोड़ के don't start reading the newspaper. I'm not saying that these are bad newspapers, ठीक है? Uh, sometimes I read Business Standard. Uh, at an individual level, uh, I find Times of India too easy to read, and also it's like it completely looks down to me and Amar Ujala ka version, ठीक है? Hindi newspaper. So again, but it's a good newspaper for people who are in a working space, ठीक है? उनके लिए बहुत अच्छा पेपर है. Yeah, but again, अपने लिए जो हैं एडिटोरियल्स पढ़ने, उसमें से जो टर्म्स हैं, जो इंग्लिश के टर्म्स हैं जो हमें नहीं आते, उन पे डिक्शनरी से जाके उनके मीनिंग देखने हैं, उनको पढ़ना है. एंड अगेन, उससे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, उन वर्ड्स को यूज करना, ठीक है? टेलीग्राम चैनल पे वी आर शेयरिंग वर्ड ऑफ द डे. अब क्या तुम उसे यूज कर रहे हो या नहीं? नो. अतुल, द आंसर इज नो. सो उन वर्ड्स को क्या तुम यूज कर रहे हो? यू आर सेइंग दैट अमित शाह इज aficionado of नरेंद्र मोदी for that matter. Yeah, it was not an Ernest Mirabilis for that matter. Yeah, anything like that. These terms which you get in your word of the day, you start using them. Okay? If you start using them, then only you can remember them. Once you can, and if you can remember them, you can actually this can help you in solving the paper. Also, why these editorials are important for law and examination? Because एक और चीज समझो, ये जो पैसेज बेस्ड पेपर हो गया है, इसमें पैसेज आने वाले हैं 450 वर्ड्स, 500 वर्ड्स, एंड दीस एडिटोरियल्स आर क्लोज टू दैट ओनली, समटाइम्स मोर, बट मोस्टली इतने वर्ड के होते हैं. And once you start reading them and without feeling bored कि नहीं क्या चल क्या रहा है, ठीक है? So this will help you in your longer run. कि there was this kid 2 days back, I got a call and he was saying कि सर पैसेज 450 वर्ड्स के पैसेज होते हैं, जब तक पैसेज के एंड पे पहुंचते हैं तब तक क्वेश्चन करने का मन नहीं करता. So again, that is a lack of motivation. You're just reading the passage so that you can solve the questions. Understand this, the importance of passages. It will help you in solving the question, and once you solve the question, you solve the question right, you get marks for it. And once you have that required marks, then only you will get the admission. So everything is linked. Okay? So you need to develop that reading habit. Few people who have the reading habit and देखो 11 12 तक आते आते हम सबको आदत हो जाती है पढ़ने की. Somebody who is in class 11th and say I don't have a reading habit, या मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, I don't believe वो 11 तक पहुंचने के chances ही नहीं थे until unless it's I don't know. 10th 10th का पेपर दे के कोई भी आया तो एग्जाम के पहले तो वो कम से कम 1 महीना तो पढ़ा ही होगा. That is what I believe. ठीक है? तो वो रीडिंग हैबिट तो है, ये तो कहना पड़ेगा. पढ़ लेता है वो इंसान, ठीक है, पढ़ सकता है बैठ के, पर क्या वो अब क्यों नहीं पढ़ रहा? दैट इज अ क्वेश्चन. ठीक है? क्या उसे पढ़ना पड़ेगा? हाँ, पढ़ना पड़ेगा. और वो किस चीज में हेल्प करेगा? पेपर को क्रैक करने में. ठीक है? सो दिस ये फंडा लेके मत चलो कि 450 वर्ड्स हम पढ़ नहीं पा रहे. दिस इज सिंपली अ रीजन जिसके बाद कोई भी मेंटर विल टेक यू वेरी लाइटली, लाइक कुछ बोलना ही नहीं है. ठीक है? Understand while you are preparing for law entrance examination, your fellow friends who are your batchmates will be preparing for competitive exams such as NEET and JEE. Okay? And they will be slogging in more than 12 hours to 13 hours in a day. And can't you prepare? Can't you give your 3 to 4 hours for this particular exam? This is also you are doing it for your career. They are also doing it for their career. If you have seen the struggle of these people who are preparing for JEE, coming down and starting with NCRT, then coming out to SC Verma, then solving organic, inorganic, physical chemistry, then magazines, then maths, then mocks of different coachings altogether, and then even Erodos for that matter. Some people do solve it. In physics, it's the book of physics. So, coming from PCM plus background and computers, I can tell you this. Okay. It's easy to crack a law entrance examination any given day because इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. Subjects are of daily nature. मतलब इंग्लिश पढ़ रहे हैं, it's like पढ़ रहे हैं. इंग्लिश तो पढ़ ही रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं. रेन मार्टिन की किताब 6th क्लास में मिल गई थी if you are from ICSE board. So तो चल रहे हम लोग अब तक प्रपोजिशन, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन सब पता हो जाता है. ठीक है? Although we don't remember it, ठीक है, बट हम सब पढ़ चुके होते हैं. रीडिंग पैसेज RC
10th के एग्जाम बोर्ड में आता है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कि अपन को बिल्कुल ही आइडिया नहीं है कि ये क्या आ गया पेपर में, ठीक है, फॉर दैट मैटर। मैथ्स भी 10th तक वाली जो होती है, प्रोबेबिलिटी तो नाम सुना ही होता है, हम सबने पीएनसी सुना ही होता है, स्पीड बोट ये सब सेगमेंट आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कुछ, ठीक है। SICI ये सब नाम सुने होंगे तुमने, ठीक है। ना हो तो तुम्हारे घर में कोई यंगर ब्रदर हो, सिस्टर हो, या मोहल्ले में जाके पूछ लेना, वो शायद तुम्हें पढ़ा दे, ठीक है। तो ऐसे दिन शायद नहीं आएंगे, खुद से पढ़ लेना, ठीक। That being said, this is what this is how the entire segment is if you're preparing for CLAT 2021, ठीक है। Again, the important point I would like to summarize is finishing the syllabus, staying motivated, having a clear cut aim, not comparing yourself with anyone else, ठीक है। That is from my end. Now I'll be taking some questions. Okay, sir, can you just give us now 15 days preparation plan fully, what we can do to crack CLAT, some advice? Okay, so this question is from Pranay. Pranay, you are preparing for CLAT 2020, I guess, yes? Yes. Okay, so Pranay, start. Simple. सेशन के बाद जाना है, सिंपल सैंपल पेपर्स तीनों उठाने हैं, तीनों सैंपल पेपर सॉल्व कर देना है, ठीक है। ये आज का टारगेट बना लेना है, 6 घंटे लगाने, 6 बजे भी बैठे, रात को 12 बजे तक ओवर है। अपन अभी तक लगा चुके होंगे 2-3 बार उन सैंपल पेपर्स को, तो आप अपने लिए वो पेपर हो जाएगा कितना मुश्किल से मुश्किल अपन को ये लगना है 1 घंटे से 1.5 घंटा, 90 मिनट्स में वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर सैंपल पेपर्स। एंड बस आज की तारीख का वो गोल मान के चलो। अब कल से क्या करो, तुम्हारे LMS में प्रोजेक्ट मेवरिक में 20 मार्क्स पड़े हुए हैं, जिसमें से क्लैट के जितने भी हैं उनको सॉल्व कर लो अगले 10 दिन, ठीक है। जब ये 10 दिन हो जाए फिर से सैंपल पेपर लेके आना और फिर सैंपल पेपर सॉल्व करना, ठीक है। फिर वो जो मॉक लगाए थे, ठीक है, वो फिर से उनको सॉल्व करना है, लेकिन इस बार 3 दिन के अंदर वो पूरे मॉक्स फिर से सॉल्व कर देने हैं, ठीक है। फिर अगले दिन जाके सैंपल पेपर फिर सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना ये है कि जो सेशन हुए थे करंट अफेयर्स के, उनको एक दिन सुबह से लेकर शाम तक बैठ के दे देना है, ठीक है। पेपर के 2 दिन पहले की जब बात आएगी तो मैथ्स के कौन से, फिर तो 26 तारीख को AI लेट है ना, ठीक है, उसके लिए तो ध्यान रखना है। लेकिन फिर पेपर जब क्लैट के लिए तैयारी करें तो उसके पहले, क्योंकि अपन को ज्यादातर चीजें आती होंगी, मैथ्स वाले जो लेक्चर्स हैं DI वाले, वो एक बार स्पीड में जाके, ठीक है, 2 पे स्पीड कर दो, × 2 वाली स्पीड पे, ठीक है, या × जितनी मैक्सिमम पॉसिबल है तुमको, क्योंकि तुम एक बार पढ़ चुके हो उसे, बस रिवाइज कर लो उसे 5 घंटे के अंदर। सो दिस इज हाउ यू डू, ठीक है। And this is what Project Maverick is easing. The sessions are available on YouTube. Now you can increase the speed of a lecture, okay, so that your revision becomes quick and easy, okay. Do that. This is what you can do for the next 15 days, and I'm sure once you do these things, you will not be sitting there in the paper and thinking about ये क्या आ गया, ठीक है. This will not be the situation, ठीक है. Do it for next 15 days, ठीक है. Sir, how do we use new words which we learn, because in our family naturally we'll talk in Hindi, so how we may use it frequently? So this question is from Shraddha. Shraddha, see, what happens is I can tell you my story. Same is in the Hindi belt, once you're living, and most of the discussion happens in Hindi, okay, at our home. But again, if you can talk to your mom, मम्मी से बात करो, जो घर में बड़े हैं उनसे बात करो, they will be ready to learn, ठीक है, they will be really ready to learn. आप उनसे जब भी बात करोगे, उनको कोई भी नई चीज बताओगे, they will be happy, ठीक है. Like if I tell my mother like कि mama, the year is annus mirabilis for that matter, so she will be question marking, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ठीक है. So I have used it for that matter once, ठीक है. It's like this, ठीक है. या छोटा भाई है, उसको बता दो, कुछ भी बता दो, you have to use it for yourself, उनको सिखाना नहीं है, you have to use it, ठीक है. So this way, this actually helps in this in using these terms every given day. You're writing your friends messages, use those terms, ठीक है. Use those terms, nadir, या whatever for that matter you have learned the new word, ठीक है. And specifically don't go and read then this particular शशि थरूर's post की इंग्लिश सीखनी है तो वहीं से सीखेंगे, not of our use, ठीक है. Okay, so it's okay, Pranay, all the best. So I've answered Shraddha your question. This is very common for people who live in northern India.
I've answered Atul's question. Gungun, CLAT 2022 again will come up with a session on this. But what I can tell you, ये पूरा year तुम अकेले इंग्लिश ले रखो, ठीक है? वो जो मैंने अभी बताया था उसको टाइम फ्रेम में जिस तरीके से किया था उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 पे कर दो बस, ठीक है? क्योंकि तुम्हें करंट जीके तो पढ़नी ही नहीं है ना। दो जो जनवरी वाला पीरियड हुआ था, जनवरी फरवरी, उसको प्योर स्टैटिक जीके, दैट इज योर आंसर। Okay. Uh, Pranay is asking, so what is LMS? How can access that now? See, Pranay, the Project Maverick is a course which is available at ₹100 on LawSikho. This we have come up so that the people who are from marginalized communities or who are in different corner of the country and they do not have those kind of mentors, ठीक है? तो उनके लिए प्रोजेक्ट मेवरिक बनाया गया कि उनकी प्रिपरेशन हम लोग ईज कर सकें। सो वंस समबडी इज इनरोल्ड इन प्रोजेक्ट मेवरिक, ठीक है, सो उनको एक्सेस मिलता है, ऐप होती है लॉ सीखो की, उसमें प्रोजेक्ट मेवरिक होता है, उसके अंदर डिफरेंट लेसन्स होते हैं, मॉक्स होते हैं, करंट अफेयर्स के क्विजेस होते हैं, लीगल करंट अफेयर्स की मैगजीन्स भी होती हैं। सो इन दैट मैनर, ठीक है, तो वो एलएमएस पोर्टल है, ठीक है, उसका यूज करते हैं। एंड this is again a very good question you have asked, and why Project Maverick came into existence. होता क्या था, मोस्ट ऑफ द टाइम एक कोचिंग है, उसमें आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, आपके 2 टीचर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बाकी एक टीचर ऐसा जिसे बिल्कुल पढ़ने का मन ही नहीं करता है, ठीक है। So again, but you have to go through that particular teacher as well. Now what this particular session does is Project Maverick, we call together those teachers, every one of us जीतू भैया in that manner, ठीक है। What happens in a coaching, once you go or some place, you find all the teacher, उसमें से एक होंगे your जीतो भैया, ठीक है, who is your mentor, who is your friend and who is your career guide, ठीक है। बट ये चीज हटाने की कोशिश की गई है प्रोजेक्ट मेवरिक के थ्रू, एंड सो दैट एवरीबडी हैज अ फेयर चांस ऑफ क्रैकिंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सही गाइडेंस होना, ठीक है। दैट बीइंग सेड, all the best Pranay, I hope you clear this exam this time itself, and you can go through those strategy sessions where I've told and other faculties have told what are the important topics. इस बार के पेपर के लिए टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करनी है, अगले साल के लिए भी टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। एंड that's all from my end. If you have any more question, you can shoot. Okay. Okay. That's all. All the best, champs. Okay, Shraddha says, whether we have to solve the mock from very early periods, sir. See, I've given you a time frame. I could have gone in that manner, but yes, you can pick up a sample paper. CLAT का एक sample paper उठा लो, so that you have an idea कि paper किस type का आता है, ठीक है। वो शायद point 1 होता है, once you receive a call from any of your mentors or any of the people who are guiding you, कि एक sample paper उठा लो, या वेट करो क्लैट का पेपर हो ही जाने दो इस बार वाला, अगर अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हो, उसके बाद वही पेपर उठा लेना, ठीक है, और देखना कि उसमें से कितने अभी कर पा रहे हो, ठीक है, बना पा रहे हो, rather if I use the term which is used in the area of बिहार, ठीक है, कि कितने क्वेश्चन बना लिए। तो जब वो बना लिए, देख लेना कितने बना पाए, फिर उसके बाद उस हिसाब से स्ट्रेटेजाइज करना कि ये वीक एरिया है, इसमें ये करना है। समटाइम्स यू सी अ पेपर, एनलैट का पेपर हुआ, इंग्लिश का सेक्शन देखा, किसी ने भी देखा, जैसे एनएलएस वाला जो एंट्रेंस, जिसने भी देखा उसने बोला ये कोई भी कर सकता है, मतलब इसके लिए खास तैयारी, इंग्लिश की तैयारी करने की तो बिल्कुल ही जरूरत है ही नहीं, मतलब ये पेपर मतलब कोई भी कर सकता था इंग्लिश का सेगमेंट, ठीक है, ये इतना सरल था। सो आ जाए ये वाला पेपर, उसके बाद एक बार उसे सॉल्व कर लेना, देख लेना क्या एरिया है, ठीक है। दैट्स ऑल द बेस्ट एवरीवन।